remember who you really are. Show me that you are still the only one for me. I'll be waiting for you. Wake up, open your eyes, raising up your fists and smashing through time walls. Before the rift splinters again, we are rebels till the end. Rise up, open your mind, hold on to your powers. No one can stop us. We are rivals till the end of time. We will clash, no matter where. We will fight, reaching across time and space. 'Cause you are my destiny to the end. You see the dawn, the flames burning brightly, shining on those memories. And yes, across all time I see you turning the tides. And do you see now, our time, our turn, we can still fight like the wind and fire. And wonder no more, that now is the only time your heart is mine. Light has fallen, darkness grows, and yes, we fight for our destiny and fate. New days smiling for the past and future. Break those chains, lead the way, fight with me. And when you wake up, open your eyes, raising up your fists and smashing through time walls. Before the rift splinters again, we are rebels till the end. Rise up, open your mind, hold on to your powers. No one can stop us. We are rivals again until the end of time. Show me that you are still the only one that matters for me. I'll be waiting for you. Wait up, open your hands, holding on to your heart. Look inside you. Can you feel it? The sparks in you. Add it up, unleash it up. Wake up, open your eyes, raising up your fists and smashing through time walls. Before the rift splinters yet again, we are rivals till the end. And rise up, open your mind, hold on to your powers. No one can stop us. We are rivals till the end of time. Remember the dust, the lights gripping tightly, trapping all those fighting souls. But yet, across the world, I see you standing in my way. And remember the time, the place we used to fight, like the sun and moon. And I wonder if ever there was a time that we were friends. The night has fallen, shadows looming, and yes, that time has come for me to seek you out. We are set now for our last reunion. Break the chains, find your way, come fight me. Do
हेलो भाई। मैं मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ भाई। अब भी उठा हूँ और मैंने बस स्ट्रीम चालू कर दिया। माय गॉड। ठीक है, माइक का सही है। ये कैप्चर में भी मैं क्या ही दिखाऊं भाई। अभी तो भाई वो कंपाइल होगा यार, मैंने कंपाइल में भी नहीं लगाया वो। आवाज इंक्रीज हो, आवाज इंक्रीज हो। आवाज ये मैक्स है यार स्केच भाई, इसके आगे आवाज नहीं जाएगी। इसके आगे मेरे ही स्केच इशू है। अबे वापस डाउनलोडिंग चल। अबे इतनी देर से, अरे हाँ स्केच भाई, अभी तो उठा हूँ भाई, अभी 5 मिनट पहले उठा हूँ मैं। स्ट्रीम, ये क्या बोलते हैं, ये स्टार्टिंग स्क्रीन लगा के मैं ब्रश करने गया था। अभी खाना ले रहा हूँ। खाना मतलब ले लिया है थाली वाली में। ये ये थोड़ा वो हो जाए तो फिर। भाई अरे सीन क्या हुआ ना, आज क्रिसमस है ना। मतलब ईव कल थी, आज क्रिसमस है। माँ की आंख भाई। मैं नहीं कर सकता गेम एक्सट्रैक्ट। नहीं कर सकता भाई मैं गेम एक्सट्रैक्ट। स्पेस ही नहीं है इतनी। मेरे को फिर कोई सी गेम उड़ानी पड़ेगी। और इस बार मैं क्या उड़ाऊं। भाई ओह, होयो नहीं। राइवल से उड़ानी पड़ेगी भाई वापस। राइवल से उड़ानी पड़ेगी वापस से भाई। कल बैठ के डाउनलोड करा है मैंने राइवल्स। बस बैठ के मैं राइवल से उड़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो वदरिंग कंपाइल नहीं हो पाएगी भाई। नहीं खेल रहा भाई राइवल्स। नहीं खेल रहे राइवल्स भाई, उड़ा दी राइवल्स। भाई अगर मैं जाऊँ भी तो क्या दिखेगा। टाइम से स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही दिखा रहा है ना। नो डेटा यूसेज 3.35%। You just added a browser source. अबे भाई मैं कड़ी गरम करने में रखी थी। रुको भाई, आता हूँ भाई, 1 मिनट।
मच कैंसर भाई। फिर डिशम कहाँ से आ गया भाई? यार नींद ही पूरी नहीं हुई है फिर भी मैं। हाँ। क्रिश का गाना सुनो। कौन सा क्रिश का गाना? हम्म। कौन सा क्रिश का गाना? डिकम्प्रेसिंग 33%। सुनाओ क्रिश का गाना। अबे मैं को नहीं देखना क्रिश क्रुश भाई। आखिरी पिक्चर कब आई थी उनकी? 2000 पता नहीं कितना टाइम पहले आई थी भाई। फिर पिक्चर ही नहीं आई एक भी। फोर्टी फाइव। दिल ना दिया। लेकिन भाई मेरे को मिल गया है ना भाई यार। तेरे टेंशन ले रहा है भाई। क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है या? अगर 50-50 हारे तो डिशम बनौती। लेकिन वो 50-50 जा ही नहीं रहा। मैं 50-50 जा ही नहीं रहा। मैं तो वेपन के लिए जा रहा हूँ। बच गए डिशम फिर। लॉल भाई। भाई क्या बता भाई, देखो अगर मैं लेनी देखूंगा, अगर भाई वो बफर निकलेगी तो शायद से निकाल लूँ मैं। लेनी बफर है क्या? कि डीपीएस है? बफर है। क्रेजी भाई। निकाल सकते हैं। क्या पता मैं निकाल लूँ भाई। अगर बफ अच्छे लगे तो क्या पता मैं निकाल लूँ। अबे भाई मालूम है तुम्हें, अभी भाई मैं कढ़ी गरम करने के लिए भाई मैंने स्टोव पे रखा था और मैं यहाँ आ गया था बातचीत करने। भाई वो कढ़ी पूरी, मतलब कढ़ी की जो कटोरी है भाई, वो पूरी साइड से भाई ऐसे काली काली हो गई है भाई, जल के। भाई अब घर पे डांट तो पिटेगी भाई कि तुमने ये कैसे जला दिया। ट्रेल करना। ट्रायल। ट्रायल करना। भाई मेरे को चप्पल पहन दो भाई। भाई पता नहीं क्यों भाई यहाँ आके बहुत ठंडी लग रही है मेरे को भाई। सही में बहुत ठंडी लग रही है। भाई वहां पे मस्त भाई मैं भाई स्लीवलेस में बैठ जाता था भाई, मेरे को कुछ नहीं होता था भाई। यहाँ पे बैठो तो फैन से इतनी ठंडी लगती भाई। ये मैं न्यू फीचर में आया है। आप अपने कैरेक्टर के साथ फीचर कैरेक्टर को अपनी टीम में ले सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। ओ भाई। भाई ये एक्चुअली भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट है भाई। कि तुम भाई मतलब उस कैरेक्टर के साथ वो एक्चुअली रन कर सकते हो जो तुम खेलते हो। बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ ये लोग ये वाला भी एक डाल देना कि वेपन टॉगल कर सकते हैं। ये और बढ़िया होता। क्या लगता है तुम्हें? वेपन टॉगल मतलब जैसे श्योर कीपर सिग्नेचर की अगर मैं वेरिएशन यूज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। कि भाई मैं एक्चुअली उसी में टीम डिफरेंस देख लूँ, मतलब वेपन डिफरेंस। वो भी एक बहुत ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट होगा।
कार्थे की टीम चल सकती है लेनी। कार्थे की टीम में लेनी चल सकती है, वो डीबफ थोड़ी करेगी। डीबफ करेगी क्या? अभी अभी फाइल एक्सट्रैक्शन कार्थे चिकोना लेनी। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, अगर इनने भाई ये इसके अराउंड मटा नहीं बनाया ना, क्या नाम है, शीशा कह रहा हूँ भाई, मेरा दिल टूट जाएगा भाई। तो भाई वो इतने अच्छे कैरेक्टर है, इतने अच्छे बफ वफ देगी, और भाई एंड में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे को सही में शीशा के अराउंड थोड़ा बफ वाला मामला चाहिए भाई, क्योंकि वो सारे बफ को सस्टेन कर सकती है भाई। हर एक बफ के लिए वो तीन तीन वो चीज बढ़ा सकती है, ऊपर से वो हीलर कैटेगरी में। 48%, 49%, 50%। अब इसमें 2 बार वेरिफिकेशन होता है भाई। एक तो पता नहीं क्यों भाई मेरे को खाने में वो बहुत लगता है मसाला भाई, पता नहीं सम रीजन भाई। मैं इतना डोसा वगैरह खा के आया हूँ वहाँ पे, बट स्टिल भाई मसाला फील नहीं होता वहाँ पे। यहाँ पे बहुत मसाला फील होता है। गुड मॉर्निंग इस भाई। गेम की तरह डिकम्प्रेस हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहा है। हम्म। मतलब फिर जब तक गेम हो जाएगी, ठीक है। भाई 4.19 जीबी करके भाई, गए भाई काम पे। अभी और वेट है भाई। बतख आ गया भाई, और कौन आया?
तब तक वाईटी पे रोटेशन देख लो लेने की, ये कर सकते हैं। मैं खाना खा रहा था, खाना खाना हो गया मेरा। मुझे तो लगा नहीं इतना टाइम लगेगा भाई सब चीज़ों में। आज मम्मी ऑफिस भी नहीं गई। आज क्या है? आज सैटरडे है क्या? आज तो थर्सडे है। यार ब्राउजर मतलब क्रोम को कैप्चर करने के लिए क्या लगाना पड़ता है स्केच भाई? न्यू कैप्चर बना के उसमें क्या, कौन सा फीचर डालना पड़ेगा? डिस्प्ले कैप्चर? विंडो कैप्चर? विंडो कैप्चर विंडो कैप्चर ये रहा। ओ भाई क्रेजी भाई, मेरे को मेरी स्ट्रीम रिकमेंड हो रही है। व्हाट द फक भाई, क्या नाम है? पेन को मैं बिल्कुल मिल के देगा। Hello and welcome to my channel, iWindaloo's Gaming. Wuthering Waves is dropping an incredible update with version 3.0, and with it we have the newest 5-star resonator, Lene. In today's ultimate guide video, you'll learn everything you need to know about Lene. Tie a bow and call that my signature. Phew, version 3.0 is bringing a lot of fancy new toys, and Lene pretty much uses all of them. She's got rollerblades to zip around the overworld, she's got the fancy retro Echo terminal, and she's got disposable motorcycles to throw at her enemies. Lene is a very powerful character who provides massive buffs and enhances the new mechanic Toon Break. Quick note, this video was filmed on the media server and things may be subject to change upon the official release. Please check the comments below to see if anything changed. We'll go through her kit, the new Toon Break mechanic, rotations, echoes and stats, weapons, sequences, teams, showcases, and finally my opinion on Lene. Tie a bow and call that my signature. Okay, look, with the new mechanic Toon Break comes an even more convoluted and headache-inducing kit to read through. Fortunately, I volunteered for the self-inflicted migraines to go through her encyclopedia of a kit, so you don't have to. There's no skating around the issue here, all the new stuff is quite complicated, and I'll do my best to provide a basic breakdown, but despite everything seeming super complicated, fortunately, Lene is very easy to use. Lene herself has 3 forte bars. She starts off with the bottom yellow forte bar called Overflow. Then she can consume her overflow to go into speedometer forte called Lumiflow. And she भाई for some reason भाई इनके पास भाई मतलब क्या बोलूं,
भाई ये जो मर्जी आता है वो फोटो में डालते हो भाई। पहले मैं सोचता था भाई फोटो इतनी लिमिटेड चीज है, भर दो कोई एक बटन दबा दो थोड़ी एनहेंस कर हो जाएगी ये। भाई ये सब देख के भाई ऐसा लगता है भाई फोटो के साथ ही कुछ भी कर सकते हैं भाई। फोटो भाई मतलब ऐसा लगता है भाई ये गेम डिफाइनिंग चीज है भाई फोटो। You can consume मतलब her इनके लिए speedometer LumiFlow to generate up to 3 bars of the true color भाई ये forte. देख Linnea's goal in combat is to go through her forte bars, going from yellow forte to the speed limit forte to 3 color bar forte. Linnea starts off in her basic yellow forte mode, where she's on her 2 feet and not on her rollerblades. Simply performing basics, heavies, and her resonance skill will generate yellow forte. However, the best way by far for her to generate her yellow forte is through her intro skill, which generates 100 out of her 120 yellow forte. So yeah, all you have to do to fill up the yellow forte bar is to perform intro skill plus resonance skill. Now that Linnea has filled up her yellow forte bar, she gains access to an enhanced heavy attack, which the longer you hold it, the more she'll be wanted by campus police, as it'll fill up her speedometer forte and she'll enter rollerblade mode. By simply holding the heavy attack for its maximum duration, she'll fill up her speedometer forte to the maximum 120. Holding her heavy attack appears to be the fastest way to fill up her speedometer, but you do have the option to release it earlier, which is useful for dodging enemy attacks. Interestingly, if she stands still, she'll lose speedometer forte, and if she moves around or attacks, she'll generate speedometer forte. Anyway, once she's in rollerblade mode, her basics, heavies, and aerials are all enhanced. But in combat, her most useful speedometer attack is her jump attack. Her jump attack, aka Polychrome Leap, consumes 40 speedometer, and each jump attack generates 1 color bar forte, and she can perform this jump attack 3 times in a row if she has her maxed out 120 speedometer. Now that her 3 color bars are full, she has access to visual impact, where in midair, just use a basic attack to consume the 3 colored bars to perform visual impact. Very importantly, visual impact has a 25-second cooldown, provides the team with 40 points of breakpoint boost, and most importantly, it looks cool. Up next, we have a Residence Liberation. Special delivery, gold boom! Linnea's liberation consists of 2 parts, with the first part where she mercilessly vandalizes her opponents with spray paint, and the optional second follow-up part where you can press the basic attack button for her to yeet her motorcycle at the enemy. Endless supply of spray paint and motorcycles aside, the most important aspect of her liberation is that it provides the entire team a 24% all damage boost for 30 seconds. Okay, I hope you're feeling loony because we've got the tunes to talk about, specifically the tune break mechanic. यार देखो ऑल डैमेज बूस्ट दे रही है तो नेगेटिव स्टेटस का वो क्या बोलते हैं स्टैक्स इंक्रीज वाला मैकेनिक का है। And no, it's not the dreaded क्योंकि commercial वही तो मेन चीज है जो रोवर और चीशा को बाकी कैरेक्टर से बेटर बफर बनाते हैं। चिकोना चिकोना के 6 स्टैक्स ताकि कारते के 6 ताकि कारते उसको ज्यादा डैमेज दे पाए एनिमीज breaks को। during your childhood interrupting your favorite cartoons, it's an all-new mechanic in Wuthering Waves. Now, a disclaimer here, the information here is still being researched and check the off-tune circle. Any character can fill up this off-tune circle. Once it's full, assuming the enemy isn't in an interruptible state, the enemy's HP bar will look interesting, as you'll also get the prompt on screen to press the F key or whatever key it might be on your console. Any character can perform a tune break, which deals some damage. चिकोना तो ना आपके टीम में ऑलरेडी। अरे स्केच भाई कहने का मतलब ये है कि चिकोना जो स्टैक्स लगाती है वो तो भाई कितने भी स्टैक्स लगाती है, बट स्टैक का नंबर इंक्रीज करने वाला ये पावर तो केवल चीशा और रोवर के पास है ना, तो वो चीज लेने थोड़ी कर रही है। And interrupts the enemy. Normal enemies are automatically tune breaked when you fill up their off tune circle. Elite enemies take a small amount of damage from tune break, and boss type enemies take much more damage from tune break. Sometimes enemies will be in an untune breakable state, as indicated by this icon here. भाई ये मैक अबॉर्नेशन भाई सही में कैंसर है भाई, ये सही में कैंसर है भाई। So you'll need to wait until they're vulnerable to a tune break to ये देखो ये वाली टीम है, इसमें ना रोवर है ना चीशा है,
तो चिकोना के जो स्टैक्स है वो 3 पे कैप हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये सेम चीज लेनी के साथ भी होगी। लेनी को भी दिक्कत देगी ये चीज। ये 3 ही स्टैक्स लगेंगे। रोवर और चीशा इस चीज को ओवरराइड करके 6 कर देते हैं। Tune break them. Tune break damage also scales off of the 40 breakpoint boost that Lene provides through her visual impact. As we can see, Yuno did quite a bit more damage with the plus 40 breakpoint boost from Lene's visual impact. And with this basic knowledge of Tune Break under our rollerblades, we can skate on back to Lene's kit. Lene is a Tune Break centric character. Inside of her भाई टून ब्रेक का अलग से मैकेनिक दिया हुआ है। talent page, you can characters actually I know, toggle but between still. Tune Rupture mode and Tune Strain mode for Lene. Needless to say, you can only toggle this outside of combat. While Lene is in Rupture mode, when she has her rollerblades on, her attacks inflict the Rupture debuff as indicated by this icon. This debuff is quite simple because when you Tune Break an enemy with the Rupture debuff on them, they'll take an extra instance of Tune Break Rupture damage. Regular Tune Break damage is indicated by the white damage number, while Lene's Tune Break Rupture damage is indicated by the yellow damage number. Meanwhile, while Lene is set in Tune Strain mode, she'll inflict the Tune Strain debuff against the target. Certain characters can interact with Tune Strain, but at the moment I believe only Lene has anything in her kit that interacts with Tune Strain. Basically, with Tune Strain she'll do more damage against an enemy affected by Tune Strain. But I expect future characters to also interact with the Tune Strain mechanic. A couple of the new standard 5-star weapons, specifically the sword and the broad blade, also interact with Tune Strain as well, which is worth noting, hence why, well, I noted it here. So, yeah, that was a lot of stuff. Fortunately, actually using Lene isn't nearly as complicated as all this might suggest, which of course we'll get to in the rotation section. In a few more details, Lene's first major passive allows her to apply the Rupture or Strain debuffs for a short time after she swaps off. Lene's second passive provides herself with a 25% Spectre damage buff for 9 seconds after she uses her रिजने को स्पेक्ट्रो डैमेज मिल रहा है ना। intro. Oh right, and Lene's outro just casually provides 15% all damage amplification and भाई अगर फ्यूचर में अभी इस पैच से मतलब है उस रीजनल पैच में अगर कोई स्पेक्ट्रो स्किल बफर आती है या आता है, मैं कर लोटा निकाल लूंगा। 25% resonance liberation damage amplification for 14 seconds. The incoming character will lose this outro buff if they swap out. Yeah, that is an incredible 40% resonance liberation damage outro. 40% लिबरेशन आउट गांड फाड़ देगा ये। भाई कितना डैमेज बूस्ट मिलेगा उसको भाई, क्या नाम है? Finally, Lene's Tune Break Strain also increases the damage taken by भाई ये एक्चुअली सेंस बनाता है क्योंकि बाकी लोग स्टैक्स का नंबर बढ़ा रहे हैं तो उससे उनका डैमेज बढ़ रहा है। बाकी लोग 3 स्टैक से 6 स्टैक कर रहे हैं रोवर और चिकोना, enemies नहीं रोवर और चीसा, तो उससे उनका डैमेज बढ़ रहा है कार्ते का। यहाँ पे लिबरेशन बोनस देगी तो कार्ते का डैमेज बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग किट है भाई। to characters that can specifically interact with the Tune Break Strain. As of Lene's release, I believe this only applies to Lene herself, but I'm certain more characters in the future will benefit from this. So to summarize, Lene provides the following buffs. She enables Rupture and Strain Tune Break mechanics. She provides a 40 break points boost buff to the team, and for characters that can take advantage of the Strain Tune Break effect, she'll provide some damage against that enemy. Again, at the moment it's just for Lene, but probably more characters in the near future. She provides 15% deep into the next character through her outro, and 25% डीप इन क्या होता है? liberation deep into the next character through her outro as well. She provides 30% attack to the next character thanks to the Echo set, and 10% all attribute damage to the next character thanks to the Echo.
and she provides 24% bonus damage to the team through her liberation, and another 24% all attribute damage to the team through her signature weapon. Wait, what the fuck are these buffs? Yeah, that is an insane amount of stuff, and frankly, her buffs are the most tune-broken, over-tuned in the entire game, in my humble opinion. Now, I also briefly wanted to talk about her exploration capabilities, and I don't usually talk about this for most characters, so it must be quite remarkable. Frankly, भाई चल रही मेरे दिमाग में था मरैन सपोर्ट ये डीपीएस होने वाली है मेरे दिमाग में यही चल रहा था तब से she is one of मेरे को कल या आज में ही पता चला कि ये डीपीएस भी सपोर्ट है the best characters for exploration as well. Support in She the can sense build up her yellow something forte to enter rollerblade mode, even without hitting any enemies. And it also lasts indefinitely until she outros or teleports. And at 120 speedometer forte, she goes even faster. Gotta go fast. I can't help but think that she says this because of the Sonic collab, and no, we are not all collectively hallucinating. This does appear to be a real thing. And yes, she can utilize her dodge while standing still in rollerblade mode to go into stealth mode for 15 seconds where she can sneak past enemies. Lene being on the party will also improve the motorbike's energy tank because why the heck not? So yeah, she's frankly amazing in combat and for exploration as well. For Lene's talent priority, you should level the following. Next, we have Lene's rotations. First, before going into combat, choose which mode you want her to be in. As of her release, I generally recommend Rupture mode, so she'll deal a decent amount of additional tune break damage. However, in the future, with characters that can take advantage of Strain, don't forget to switch her over to Strain. Now, I know all the stuff from earlier with Tune Break and her very long kit is a bit overwhelming, but fortunately, Lene's rotation, once you practice it a couple times, is quite smooth to execute. Start off with her intro, and I recommend letting most of the intro's hits connect before using her liberation. At least I personally found that to be more reliable for her concerto. Next, you can optionally use the second part of her liberation, you don't have to use it, but you can, by pressing the basic attack button to yeet her motorcycle at the enemy. Then use her skill plus echo, and the skill will fill up the last little bit of her yellow forte bar, allowing you to hold her basic. Hold her basic for the maximum duration to fill up to 120 speedometer forte. Now you can jump attack 3 times, which gives you access to her mid-air forte basic visual impact, where you can then outro her off the field. As for a full team rotation, our team on Lene's release will be Chikona, Lene, and Yuno. Needless to say, Lene is fantastic with other Liberation DPS characters thanks to her 40% Liberation Deepen, and frankly, तो इससे दोनों का डीपीएस आएगा ना मतलब किसका डीपीएस आएगा ये टीम काम कैसे कर रही है इसमें मेन डीपीएस कौन है लेने she's still fantastic for almost any DPS character, but we'll get into more team comps later in the video. And और अगर ऐसा है तो इसमें हील कौन दे रहा है on the screen, you can at the very least start off with a Chikona plus Yuno rotation if you have them. Another one of Lene's best teams on her release is with Yuno and Augusta. And since Lene is going first in this rotation, for her first rotation, she won't have an intro skill. Fortunately, Lene can simply replace her intro skill with 2 basics 1 through 3 strings, and the rest of her rotation is still the same. As we can see, Lene also has the flexibility to be played at different parts of the rotation cycle. As for the full team rotation with Augusta and Yuno and Lene, it'll look something like this. One benefit of using Lene here is that she provides Yuno with a massive 40% liberation damage outro, while also providing Augusta with a decent amount of full party buffs. Augusta, of course, benefits from Yuno's buffs as well. मेरे को थोड़ा सा और पीछे करना Different parts of the rotation cycle. As for the full team rotation with Augusta and Yuno and Lene, it'll look something like this. One benefit of using Lene here is that she provides Yuno with a massive 40% liberation damage outro, while also providing Augusta with a decent amount of full party buffs. Augusta, of course, benefits from Yuno's buffs as well. Tie a bow and call that my signature.
Up next, we have Linnea's echoes, and stats. Let's start with her stats, and you guessed it, it's the usual 4-3-3-1-1 setup. For the 4-cost main stat, with crit rate weapons, you should generally use crit damage as the main stat, and with other weapons, you can consider crit rate as the main stat. For the 3-cost echoes, it's the usual Spectro plus Spectro damage, with replacing one of the Spectro damage with attack percent being perfectly fine. However, as usual, running double attack percent does lose you a bit of damage. While Linnea typically doesn't have energy issues for most teams, if you do find yourself short on energy, you can definitely run her with some energy regen main stats. Since Linnea's actual stats don't usually contribute too much to the team's damage, it's fine for her to lose some damage. While she definitely can contribute a lot of damage if your team can get multiple ruptures against the enemy, rupture doesn't scale off of her offensive stats anyway. As for the echo sets, she has ये two अच्छी चीज है कि रप्चर का जो डैमेज दिया हुआ है ना इनने, वो मतलब तुम्हारे स्टैट्स पे बेस नहीं रहेगा, वो एक फिक्स डैमेज वाला ही चीज है। ये अच्छी चीज है काफी। main options. With the new echo set, the Pact न्यू फेडरेशन से फेडरेशन बोले तो of Neon Light Leap being tailor-made for her. With this set, you should equip the Hyvatia Echo, hopefully I'm saying that correctly, in your main slot, as this echo provides the incoming resonator a 10% all attribute damage boost. The 5 set bonus provides 30% attack to the next resonator while Linnea is using it, so yeah, another new character, another new echo set to farm. Alternatively, for just a slight performance loss for the team, Linnea can also use the Moonlit Clouds set. The Moonlit Clouds is slightly worse than the Pact of Neon Light, but it's honestly perfectly usable, so it's up to you if it's worth farming the new echo set for Linnea or not. As for Linnea's energy requirements, it's definitely on the low end, ranging from 7% to 36% depending on her team. But as mentioned earlier, Linnea can run ER 3-cost echoes without costing your team too much in terms of performance if you need to. As for the substats, it's the usual. Get as many energy regen rolls as you need, then crit, then attack percent, followed by basic attack damage, since most of Linnea's damage counts as basic attack damage. Oh right, and in case you're wondering, none of these stats should affect Tune Break or Rupture Break damage. So yeah, these stats are primarily just for her own direct damage output. Up next, we have Linnea's weapons. And tune breaking news, her signature weapon, the Spectrum Blaster, is her best weapon. And it even comes with cute emojis. This weapon basically just provides 24% all attribute damage to the team when used by Linnea, so yeah, it's a good weapon. But surprisingly, the Static Mist is also a fantastic choice for Linnea, as when she outros, she'll provide the incoming Resonator a 10% attack buff, making the Static Mist her second best option. And in this specific set of calculations, where she is supporting Yuno as the main DPS, the Static Mist is at roughly 93.7% of her signature pistol's performance for her team's DPS, which is actually pretty fantastic. After that, you can just use whatever pistols increase her damage by a bit, like for example the Phasic Homogenizer, which is the new 5-star standard pistol, or the other pistols, but honestly, besides the Spectrum Blaster, none of the other pistols are worth pulling for her, as we're talking a team DPS range of 90.5% to 92.7%. So yeah, just slap on whatever pistols can help her do a bit more damage if you don't have her signature pistols or the Static Mist. गेम ऑन करो, हो Tie a रहेगा। bow and call that my signature. Up next, for those of अब you इतनी who गाइड bought देखी है तो NVIDIA थोड़ी सी stock और ही back सही। when they were actually a gaming GPU company, we have Linnea's sequences and investment priority. Linnea's sequence 1 increases the damage of her jump attack and leaves spray paint on the ground for longer, which also groups up enemies a bit. And it also fills up her yellow forte bar if she's out of combat for 2 seconds. So this can also potentially shorten her rotation a bit by allowing her to optionally skip her resonance skill. However, by skipping her resonance skill, you might need a bit more energy regen. We made it to Linnea's teams. Linnea specializes on Tune Break focused teams and with Liberation damage focused DPS characters. One of the better characters she can provide that massive 40% Liberation damage buff outro to is Yuno. And Yuno is perfect for, well, passing on that buff to Augusta. So a very strong team for Linnea on her release is with Yuno and Augusta.
as Augusta also benefits from the many full team buffs that Lene provides. Needless to say, you can also replace Augusta with other heavy attack damage DPS characters like Jian as well. Of course, you can also use main DPS if you'd like with Chakona. Other liberation damage characters like Shangli Yao, Cal Karo also work well with Lene. Needless to say, Lene is also just very solid as a भाई ये मैं निकाल सकता हूँ इसके लिए, क्या वो नाम है, शांगली याओ के लिए, क्योंकि शांगली याओ की टीम एक्चुअली बहुत वीक है. general buffer, and she can even buff characters like Carlotta. Carlotta, of course, will miss out on the liberation deepen क्योंकि भाई वो एक DPS है भाई, मेरा बहुत लैग करता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है. part to the outro buff, but the rest of the many buffs that Lene provides will still apply to Carlotta. You can even use her with Filova because why the heck not? गाइड वीडियो है ना, गाइड वीडियो की कॉपीराइट नहीं आती, स्केच भाई नहीं आती ना, एक बार कंफर्म कर दो भाई यार, ऐसे डराना मत भाई. ओ स्केच भाई नहीं आती भाई. गणेश भाई तुम तो भाई आते ही भाई. You guys know the drill Get now. hard It is भाई. time for a quick भाई. showcase of Lene. But up next, we have Lene, and Augusta. So in this case, we have Lene being the opener character, so we have to spam a couple basic attack strings in order to get that, 100 forte points that her intro normally would have provided. So in this case, of course, those basic attack strings, 2 of them to be precise, provide enough there. And yeah, so as we can see, मैंने पहले कभी शायद देखी होगी, बट भाई मैं सही बताऊं, इसकी मेरे को गाइड बहुत अच्छे से समझ में आती है फॉर सम रीजन. आ गई ब्रैक्स की भी. now we're going to go into Yuno's sub DPS rotation, and gotta be honest, I feel like it's been a hot minute since I've used Augusta. So here we go. I think I'm doing most of a rotation fairly correctly, assuming I don't get interrupted. And भाई लेकिन जनरली बताओ, इस टीम में तुम्हारे लिए वो कौन है, सपोर्ट कौन है, हीलर कौन है, क्या ये हील भी करती है? But yeah, this team feels pretty good, all things considered. And Lene provides that massive liberation damage bonus to and then also she provides a lot of all team buffs as well, like for the whole team. So that way Augusta can also benefit from a significant portion of the buffs that Lene provides, which is absolutely fantastic, and that's one of the reasons why Lene is quite a strong character. Honestly, pretty universal, all things considered, as a very, very strong buffing character. So yeah, as we can see, these chambers that definitely kind of favor these elements a bit, although this chamber does not resist lightning damage, which obviously Augusta does lightning damage. So yeah, that is worth noting. And yet this team still did quite well, even without super strong favoritism towards lightning damage. Anyway, up next, and for this one, she'll be supporting main DPS in this specific chamber, and we are also opening up with Chakona as the first part of this rotation, introing Lene onto the field in order for her to do the cookie cutter rotation. And in this case, I got walloped while trying to throw the bike at the enemy. So yeah, it is what it is. But anyway, these enemies also resist Spectro, so that is definitely worth noting. And that means, of course, Lene's personal damage is going to be doing, well, less damage. However, fortunately, her damage output doesn't make up the majority of it. पता नहीं क्यों मेरे को some reason भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये ट्यून ब्रेक मैकेनिक ऑटो ट्रिगर होना चाहिए, मतलब वो तो मैं F दबाने की जरूरत ना पड़े, वो जैसे ही शील्ड पड़े वो अपने आप ही ट्यून ब्रेक मैकेनिक में ट्रिगर हो जाए. मतलब पता नहीं क्यों मेरे लिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट होगा. These teams DPSs or even close to the majority. So honestly, it's fine. She's more of a support character, providing massive buffs instead of just focusing on her own personal damage. But yeah, you can see the white text there being the break damage whenever I have the opportunity to kind of do it. And I try to do it during times when the rotation doesn't really get interrupted significantly by the break itself. But anyway, we skipped ahead a bit because, yeah, I mean, you guys can watch the same rotation over and over, but I think you guys get the point overall. So here we can see that we are just mainly performing Lene's cookie cutter rotation here. Pretty much you just... मेरे को एक चीज और बताओ, यहाँ पे मेन डीपीएस यूनो है, तो अपन ने एरो एरोजन के स्टैक्स लगाए हैं. हाँ कर रहा हूँ गेम ऑन भाई, एक सेकंड रुक जाओ. लेकिन अगर मेरे को लेनी का डीपीएस चाहिए तो मैं स्पेक्टर फ्रिजल भी लगा सकता हूँ क्या? go through the same cycles, and once you get it down, the inputs down a bit,
yeah, it's going to be pretty smooth sailing, all things considered. And one really cool thing about Lene is that she moves a lot. So oftentimes, just by moving a lot, she'll actually dodge a lot of enemy attacks. And she jumps over the enemy, then she plunges, she goes behind the enemy, she goes far away from the enemy. So that's an interesting way to kind of make her actually be a lot less interruptible, just because of her insane mobility. Lene actually does help main DPS Yuno quite a bit. We have Frolova, and I actually really like this team. Even though, like, you know, obviously Lene's not meant to cast a lot of echoes or whatever for Frolova, but the damage buffs that she provides are just, yeah, a lot. So this team ends up working out quite well, all things considered. And out of all the teams, actually this one ended up being the fastest clear time for me personally, but you know, this one is a bit more Havoc favored because there's like 10% Havoc resistance shred or whatever, plus some damage bonus on normal attacks or basic attacks or whatever. So yeah, that's why I don't typically like compare directly the clear times of these tower adversities, or at the very least I say anecdotal runs, taking a giant grain of salt. Like, don't, you know, use these as the end all be all for you know, these teams' performances in comparison to each other. But anyway, a very smooth rotation now. By this point, I've gotten a lot more familiar with Lene's rotation, so everything becomes much more smooth in terms of executing, and it gets you know, trained into muscle memory, where obviously you're going to be able to execute it quite well over and over. So yeah, here we go. Next, this team is going to finish off this chamber pretty effortlessly, all things considered. So yeah, very strong showing for Lene on multiple different teams. Closing statement. So there you go, the ultimate guide on Lene. Lene is a very powerful buffer and sets a new standard, frankly, for such characters moving forward. Version 3.0 will likely introduce more ways to interact with the new Toon Break mechanics, and Lene looks like a very promising character for this new mechanic. Not only that, but she's simply fantastic to use for the overworld, rollerblading everywhere, and gotta go fastering. And I personally plan to pull for her. Let me know what you think about Lene down in the comments below. As always, I appreciate every single one of you. This is I Went to Lose, signing out. अच्छी तो है भाई। भाई स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, डिलीट करना अच्छी है, नीचे ले आओ तो बात बन जाएगी। हाँ आई आइकन पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओह नाइस। ये बनेगा शॉपिंग, देख लो इस भाई। अबे मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं हूँ भाई। Charles the update. भाई 45 की पेटी है। 45 की पेटी है।
इस पे तो 0 की बेटी है भाई। 45 और 80 में मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई। फिफ्टी फाइव हो गई, ये 65, ये 75। Opening greeting, foul spirits be gone, all safe and sound. हर्षद भाई वेरी गुड भाई। 4 स्टार भी रिसीव नहीं हो रहा। मैं वर्फेस, आई नो भाई, आई नो तुम वर्फेस हो भाई। मैं क्या पुल करूं भाई, लेनी पुल करूं या फिर इसका वेपन ही निकाल लो। लेनी बहुत प्रॉमिसिंग कैरेक्टर लग रही है, बट ठीक है। आपसे थोड़ा बात करना स्ट्रीम पर मैसेज करना, ठीक है भाई। करता हूँ मैं। ओए इस पे यही वाले पुल लगने वाले हैं, इस पे यही वाले पुल लगने वाले हैं, इसी स्टैंडर्ड बैनर में ऐड हुआ है। गेम साउंड कर लो आपकी सब पे, सॉरी गेम साउंड कम कर लो। अभी ठीक है कि अभी भी गेम की साउंड ज्यादा आ रही है? अब बेटर है। नहीं पिस्तौल निकाल लो, चिकानो को देना। हाँ हो गया मेरा भाई, हो गया।
हो गया भाई 20% एट्रीब्यूट डैमेज बोनस। भाई मैंने क्यों समन करा इस पे भाई, छी भाई। इसके अबे इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से देखते हैं? नहीं, अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से देखूं मैं, किसका पैसिव क्या था? अबे यार सब भूल गया मैं। आज छुट्टी है, नहीं मैं घर ले छुट्टी लेके घर आ गया हूँ, कल ही घर आया मैं। कल ही घर आया हूँ। पीक स्टोरी भाई, वो 20% एट्रीब्यूट डैमेज बोनस भाई। भाई क्रेजी Off we go. The divinity may foresee the future of the world, but I doubt they can predict which song people will play tomorrow. Let the show begin! Leave it to me. Hopefully this helps. I am the Tempest! Tempest of slashes. Ready for battle. Lend me your power. Wind Rider. ये भूल गया था, कॉलेज नहीं गया आज। क्या भूल गया था? वेपन भी अच्छा है यार। यार अब भाई मैं अपनी मालूम चॉइस ही नहीं बना पा रहा। मेरे को सिग्नेचर चाहिए, मेरे को स्टैंडर्ड बैनर वाला वो वेपन चाहिए, मेरे को भाई लेनी चाहिए। मैं अपनी चॉइस ही नहीं बना पा रहा भाई। गोल्ड हो गया वापस। स्टैंडर्ड नहीं, बेस्ट नहीं है, बेस्ट तो सिग्नेचर ही है, बेस्ट Back in सिग्नेचर ही action है। together again! Go over here. Zip. Watch the head. Need a ride, sweetheart? Head. Special delivery. Go. पार्टी पास भाई दे रहा है। हाँ मैंने दे दिया भाई, आप लेट हो गए। Shake it up. I'll indulge you. Bow before me. Praise me. Causality, overturn. Taste my resolve. मेरी पार्टी भी रहनी है, आप लेट हो गए भाई। Face me. On you go. I shall bear witness. Entertain me. Ha! Leave it to me. Slowly. In war with time. तो ग्राइंड कर लूँ I'll indulge you. या मैं क्या इंट्रो आउट्रो सकता रहता हूँ भाई। Face me. Cycle. On you go. Present. The moon is full. अब तो वैसे मैं वेलोम में महीने हो गया, तो अपनी आईडी बना ले, अपनी आईडी बना ले। रैंडम कभी कभी खेलूंगा। हेलो प्रणव भाई।
begins the night's story. Wind howls, unfettered by bounds. Slap. Thanks for watching. Listen, the trio of destiny. Perish. Such is their blessing. True form revealed at last. Tides rise and crash. Exonerate. Atonement. Such is their blessing. Me signing off. You have come. Where you go? अभी तो story begin हुई है. See ya, bye. Yes. Bye bye. Thanks to Namipon's efforts, the Black Shores has confirmed Lahai Roy's relative coordinates to Hanami City and stabilized a one-way tunnel. Spoiler नहीं चाहिए उनको. अच्छा. अच्छा. You may set out Right. whenever you wish. What is it? This? Chisa taught me how to make this beverage. I find it tastes better with more milk and sugar. Coffee. I just made a cup. Would you like to try it? Very well. Were you worried about something just now? About Lahai Roy. The current of this is an uncommon state, and for now, the Black Shores can glean little else from what lies beyond the rift. Unlike other regions on Solaris, Lahai Roy has no sentinel to guide its civilization. Once considered naught but a forsaken frostland, it remained hidden until the Space Trek Collective, an international research organization, discovered it. Yet the Threnodian has always lurked in the shadows of this frostland, causing wave-worn phenomena such as the Void Storm. Exposure to a void storm drains human frequencies until they vanish. I suspect that your own frequency loss is linked to this abnormal storm cycle. The Space Trek Collective is at the forefront of frequency stabilization research. Once there, you will undergo a full examination and receive treatment. So, the source of the problem and its solution can only be found there. Yes,
The way to Lahai Roy is open. It's time for you to return. The paperwork for entry into Star Torch Academy. Access to Lahai Roy requires strict clearance, so the Black Shores arranged for you to enter as a student. This acceptance letter belonged to your past self. It's still valid and will grant you access. Please, keep it safe. So, this trip's theme is back to school, huh? Once you enter Lahai Roy, I won't be able to contact you, but I will be here, as always, awaiting your return with new stories to share. If only that were true. My apologies. I'm late. It's time to set out. It is cinematic view of It's just thinking हिल नहीं पा about रहा going हूँ back to the academy kept me up all night. You too? Yes, I can imagine. Never mind. Whatever happens, I'll face it head on. You taught me that, remember? That means you should relax too. भाई ये सिनेमैटिक हटाओ यार Oh my, the day's finally here. The coordinates have all been calibrated. A smooth landing guaranteed. The tunnel is stable, but only wide enough for one person at a time. I see. Then please let me go first. Namipon, Shorekeeper, thank you for looking after me during this time. Oh, don't get all serious. You can visit during your holiday. All right. I promise I'll visit often. Well, then, River, I'll see you at the academy. The tunnel is stable. She'll arrive safely. You are fully prepared, I see. Safe journey. All right. Time to go.
Journey well. Oh my gosh, I'm so sorry. You okay? Hurt anywhere? You're a Star Torch Academy student too, right? Come on, I'll get you to the infirmary. It's a void worm. We gotta get out of here. Hold tight. भाई You okay back there? Sorry, I didn't see you. I'll handle this. I'm fine. But this void worm is carrying the Canodian frequency. Huh? How do you know that? Never mind. I know a few tricks to shake it off. It's that guy! It stole your frequency! I'd know that stink anywhere. Now is a good time for a face-off. We'll settle the score later, Abby. इससे नहीं जाना है मैं उसी से जा रहा हूँ But it's not getting off easy. ठीक है भाई So this is what everyone here fights against. The Academy's got a defensive barrier for the Void Storm. Once we're there, we're safe. Darn it! It's charging up. Hang tight! Careful! It's closing in from the back. Got it. Hang on. Full throttle! Need a place to use the terrain against it. What about over there? Easy. Leave it to me. Perfect. Let's go. Safe and sound. Is that building over there? Oh, that's Star Torch Academy, where we're heading.
Pretty amazing, huh? It's far beyond what I'd imagined. Oh, didn't get to introduce myself. I'm Lene, by the way. I saw your acceptance letter. So, freshman? What's your name? Oh, okay. I got it. It's not totally safe yet. Let's keep moving while we talk. Sure you're all right? I wasn't exactly going slow back there. But you don't seem phased at all. Sorry. I mean, your reflexes are impressive. You reacted fast. I'm fine. You're... Welcome to Star Torch Academy. Let's get your terminal registered at the Resonance Nexus. Since you don't have a frequency cassette recorder yet, just upload your info. That'll give you campus access and a permit for a vehicle. Now that I'm inside the campus, the frequency fluctuations in the space seem to have stabilized. You seem a little off. You sure you're good to go? All right, infirmary it is. A lot of freshmen get frequency disruptions from the Void Storm when they first arrive. And you landed in an active void worm zone. On top of that, I kinda hit you. An active void worm zone. What were you doing in a place like that? Well, I needed to collect some ecological data for my research. Wait, no, that's not it. I was testing my new modified bike. No, I should say...
between us? If the teachers find out I skipped class, went joyriding, and hit someone, oh, my record can't handle another strike. Consider it a huge favor I owe you. If you ever run into trouble here, just come to me. If I can do something about it, I'll do anything you ask. Oh, excuse me. I gotta take this. Hey, where did you run off to? I called you so many times, left messages, but you didn't answer. Don't tell me you forgot what day it is. Today? Let me check my memo. Professor Elisev's group project report. Oh no, please tell me it's not today! Lene! I'm so sorry. I'm coming right away. The resonance nexus, and I need to take you to the infirmary. क्या हो गया Okay, भाई? I'll meet you at the infirmary when I'm done. ठंड भाई मेरे को भी लग रही है। मेरे को भी लग रही है। अरे यार मेरे को एक बात बताओ यार, वो एक ऑप्शन आता था ना, मैं बढ़िया पूछी भाई, तुम बताओ। एक ऑप्शन आता था ना वो उसका, वो जो सिनेमैटिक्स रहते हैं वो फुल स्क्रीन पे होते हैं, rather than भाई वो ऐसा सिनेमैटिक मोड, वो कहाँ पे है? मेरे को नहीं मिल रहा। मैंने से गेम नहीं देखा, याद नहीं। 10 किसका वेपन निकाल लिया तुमने भाई? किसका वेपन निकाल लिया? लेनी। ओ भाई बढ़िया। कट सीन लेटर बॉक्स फुल स्क्रीन, ये मिल गया भाई। यार वो मालूम है मेरे को बहुत बहुत बेकार लगता है भाई वो ऐसा। दस फुल्स दे दिए इनने फ्री में। Spectral analysis indicates a 12% anomaly. नहीं कर रहा था ना फ्री वाले वाले। Precision and quantification of the spectral oxide anomaly in rare earth element concentration.
चलो अभी मैं स्टोरी चालू कर रहा, आता थोड़ी देर में। आओ। भाई क्रेजी कट सीन्स है भाई। भाई क्या मैप है भाई। Abby. भाई ये मोबाइल इंटरेक्शन भाई कुछ तो क्रेजी लग रहा है मेरे को। Just a bit winded after grappling with that big old drug. Are we gonna head straight to the infirmary? भाई मेरे को ये बाइक अनलॉक करनी है, कैसे करना है? Yeah, but we can check out the campus on the way there. भाई झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये जगह कितनी लाइवली लगती है भाई, कितनी लाइवली लगती है जगह। Frequencies calmed down a lot, but what you've lost still hasn't recovered. That void worm must have snatched it. Smells like a Pinodian, just like that big eyeball. The Academy's and that girl who appeared out of nowhere. Her voice was like the one I heard over the radio in Honami City. Maybe it was her. Really? Maybe she's in luck. Let's focus on fixing my fading frequency first. We can keep an eye out for her in the meantime. As for Lene, she's hiding something. But I've got bigger priorities right now. First, I need to get my bearings here. So, what's your true story, rover from the Black Shores? Figures. I was being watched. The group project nearly killed me, and now this. From here on out, things will get busier. About the notes you lent me last week, I spotted a few parameters that seem off. Greetings. Are you
feeling unwell? Or would you perhaps be interested in hearing one of Nana's health tips? Nurse Nana, you're gonna creep out our precious new student. But he didn't even flinch facing that void worm. He's probably the type not easily spooked. I can see that. Calm, just like little Lene. So, little Lene, need another sick note today? What's your reason this time? Stomachache? Headache? Twitchy eyelid? Palpitations? Or... Not me this time. It's him. Could you check on him, please? Yep, came straight here after finishing my project report. I just couldn't relax until I saw your full checkup results. Are you hurt anywhere? Did something happen? Oh, it was my fault. I'm so sorry. Oh my, no need to panic. Let's do a quick checkup, shall we? Please hand me your cassette. I'll need it to analyze your vitals. Oh, right. He hasn't officially enrolled yet, so his cassette hasn't been assigned yet. My. First time I've seen a student visit the infirmary before even enrolling. But don't worry, we'll start the examination right away. Vital scan initiated. Temperature normal. Rebel waveform stable. Minor scratches detected. Just minor scratches? Was that a joke or a metaphor? Mild frequency loss and residual void storm waveform detected. Where exactly have you two been? I see. Young man, please follow me this way. Little Lene, aren't you going back to class? Oh, I want to stay until the results are out. Don't worry. I've already informed Dr. Herson. He just finished his rounds and will be back shortly. Please take a seat here and close your eyes. What's the situation? The results are out? Let me see. A bloom bearer of the Black Shores, brought in by recommendation. Quite the interesting entrance. I'm Luke Herson, the attending doctor here at the infirmary. Most students call me Dr. Herson, but if you prefer Dr. Luke, or just Luke, that's fine too. Well, according to the report, your frequency is a bit unstable, but it's settling down now. Nothing to worry about. As for the frequency loss, though, I'm sorry. I can't track the exact source. The Research Institute might have a more thorough scan for that. I will say, charging off into a void storm without proper protection isn't recommended. The students I saw earlier, they risked everything for a little research data. We always stress that life comes first, but there's something about this academy's spirit that makes people throw caution to the wind. Students, teachers, it's hard not to worry sometimes. Sorry, got off track. I just mean, stay sharp until you understand what you're dealing with. Freshman. Well, let's get that cassette burned, shall we? It'll make getting around much easier for you. And if you feel unwell or run into problems, don't hesitate to come find me. Whether it's school, daily life, or something you can't put into words, I'm always here. Looking after students' mental health is a part of my job too. Dr. Herson, a synchronist at the Rebel College has fallen unconscious, requesting medical assistance. Understood. I'm on my way. Well then, see you later.
Dr. Herson, isn't see you later a bit odd for a doctor to say? You're right. Let me rephrase that. May things go well for you. Welcome back. How'd it go? Are you all right? Any problems with your results? I'm fine. By the way, this cassette you've all been mentioning, what is it? Oh, the cassette. Every new student gets one burned. It's a special device used here in Lahai Roy. Sort of like an ID and safety device all rolled into one. You'll need access to the Research Institute to get one. And, well, that means you've got to be officially enrolled first. Okay, let's get that done first. Got it. Enrollment is handled at the faculty office. I'll take you there. Crazy alert. Hello Sara bhai, how are you? Physical based animations. आज तुम पे कैसा टाइम आ गया भाई? मैं तो ये सोच रहा हूँ how you got that time. हमें वे पॉइंट है, यही है क्या वे पॉइंट? वो है नीचे वे पॉइंट भाई, मैं ऐसे ही समझ के इग्नोर कर रहा था, टाइम मिल गया। इग्नोर कर रहा था बोले तो, इग्नोर कर रहा था। Hold on. Let's pause here for a second. What the fuck is ignore? Void worms have been unusually active lately. We really need to finalize a countermeasure soon. How's the defense array holding up? It took heavy damage in the last major void storm. The Department of Engineering is pushing extra manpower to repair the हार lower गया, मैं भी हार गया। We need to restore remote control of both the defense array मैं भी and हार the गया lure भाई। device, and fast. If not, we'll be at a serious disadvantage. Worst case, we'll have to send a suitable resonator to handle it manually.
But that area is too close to Void Worm territory. It's too dangerous. Professor, we can't gamble with the safety of our faculty and students. I know. That's exactly why we must learn the cause of this Voidstorm cycle's irregularity. I've only seen readings like this in simulations. I have a meeting. Please excuse me. अच्छा है सब हार जाते हैं. इसमें अच्छा क्या है भाई, सब हार गए तो. Looks like they're done talking. Let's head over. Do you need something? Oh. Lene, you skipped your cultural studies class again today, didn't you? Darn it, I almost forgot. That's because... You're always skirting the minimum attendance requirement. Keep this up, and only perfect scores in every subject will save you. Understood. 3 subjects left. I'll do my best. That's not the point. Linnea. Oh, never mind. What brings you to the office? Miss Voss, I'm here to help him get enrolled. He's new here and still getting familiar with the place. Enrollment? At a time like this? May I have your name? Let me check. Yes, you're on the list of new students who haven't reported yet. And you passed the synchronist test. भाई ये जो ये दिया ना डिक्शनरी ग्लॉसरी, भाई ये बहुत सही चीज है. So you're a कि Black कुछ नए टर्म्स Shores डाल दो और recommendation. फिर उनको That समझने में explains how you made it वहाँ here उसके during definition और वो सब Voidstorm रखो. season. Actually All crazy right. भाई. Identity confirmed. First, you'll need to register your personal information, then take an ID photo for your student card. If you have any questions, feel free to ask any time. As for Lene, It's recess right now. I'll take him through enrollment and give him a quick camp. Oh, you. Fine. If you insist, I'll leave it to you. Leave it to me. All right, freshman, let's get you enrolled. First up, name. Just input it. Your next, contact address. You can fill in your home or guardian's address. All set? Then it's time to take your ID photo. Since you're joining midterm, a lot of things aren't ready yet. That's what happened to me, too. Don't worry. Ready? Think about what pose you want to strike. Ooh, looking sharp. Let's go with this one. Huh, that's pretty. Straight and proper. But I think you could show a bit more personality. Not bad. You look cool. All right, look at the camera. 3, 2, 1. Done. Oh, good idea. Hold on a sec. Excuse me, Miss Voss? Could you take a photo for us? Ugh. All right. Let me see. Ready? 3, 2, 1.
हाँ ये वही फोटो है, ये वही Thanks, फोटो Miss है। Boss. Document uploading. Done. Let's go pick up your student card. Let's see. All set. Here, keep this safe. Don't lose it. Absolutely. That card's your lifeline. It gives you access to gates, the cafeteria, even hot showers. Lose it, and you'll be roughing it. That said, if you're fine with missing out on these little conveniences while waiting for a replacement, I suppose it's not. Since you're a synchronist, it's also the only pass linked to your simulator cockpit. Our goal with the Exostrider is to take on the Trinodian causing the void. Colossal Micro. You know about it, right? The Exostrider. Even after all these years of research, no one knows which civilization built it. Some think it shares the same origin as the Sentinels, but no Sentinel has ever confirmed that. Same origin as the Sentinels. I haven't gotten that feeling. Maybe it's too far away? Where is the Exostrider? Not here. But you saw that giant sword, right? That's its weapon. Keeping Trinodian LF1 contained beyond the Strider Gate. We've collected enough Exostrider components to build exclusive simulator cockpits for Synchronists. With training and fine-tuning, you'll boost your synchronization rate with the Exostrider. That'll be one of your key courses. Sounds like you're attempting some sort of artificially induced resonance. It's a multinational project. It's inevitable some new Federation methodology. Don't worry. We've filtered out the extreme techniques. You could trust us. When I say you can trust us, I mean it's safe. The whole project passed the Black Shore's safety evaluation. All the nations involved approved it as well. Besides that, the Exostrider is also linked to the upcoming new solar ceremony. Teach, don't you have another class? I do. And you, young lady, if you know the schedule so well, why aren't you on time for your class at well? Welcome to Star Torch Academy. With your student card, you can now burn your cassette at the Research Institute. Miss Lene, if you have time, take our new student there. How do we get to the Research Institute? Usually, I take the Star Torch Express, or get my own ride. Since you're now officially a Star Torch student, you get an Academy-issued vehicle. Rare chance. Want to give it a try? You bet. All right, let's go pick up your ride. Mr. Sigma, I brought the 9th Great Mystery to pick up his vehicle. Zero tolerance for traffic violations. Zero tolerance for risking lives. Signal Intelligent Guidance and Management Automaton. Sigma, at your service. Huh? That's it? Pretty underwhelming intro today. This week's student poll ranked it number 1. Miss Lene, perfect timing. I noticed that your vehicle has... Mr. Sigma, we're here for the new students' ride. We need to get to the Research Institute for cassette burning. Top priority, you know. Confirm. Rover, your vehicle is ready.
Please read and memorize the StarTorch traffic safety regulations. Then tick, I have read carefully, and sign. कैसे चल रही स्टोरी? हाँ अभी तो जनरल स्टोरी है, इतना कुछ वो नहीं है। लोअर वाइज इतना अच्छा नहीं है अभी, बस इंट्रोडक्शन है कि हाँ आप चीज़ें ले लो। अभी ये ट्रैफिक रूल्स के साथ आया हूँ तो भाई यहाँ बाइक अनलॉक होगी। इसके बाद प्रॉब्ली स्टोरी नहीं करूँगा, एरिया खोलने जाऊँगा। Confirmed. Thank you for your cooperation. Safe travels. Great, let's go. Please wait. Resuming dialogue. Scans indicate your vehicle has had 13 speeding incidents within the last 20 days. Drive safely and comply with the Academy's traffic अरे safety स्केच भाई आपको याद है वो थंबनेल के लिए अपने जो फोटो निकाली थी Your unauthorized रेडिट से, modifications fall into a वो शोल्डर पे हाथ gray रखने वाली area जो अभी of the थंबनेल पे vehicle डली हुई है। management code. For your own safety, I strongly advise discontinuing all such modifications. Mr. Sigma, all I did was add a turbocharger, tweak the suspension, and upgrade the brakes. Hardly a violation, wouldn't you say? Besides, compared to seniors strapping missiles and anti-gravity wheels on, I'm practically a model student. Yep. One senior even turned his bike into a light tank for a project. Drove it straight into an active voidworm zone. I must note that the student committed major vehicle management code violations and breached dozens of school regulations. Severe disciplinary action was taken. Which was revoked when he brought back critical voidworm data. Now's our chance. Go, go! वैलो कब? वैलो मैंने उड़ा दिया, मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गेम का साइज ही बहुत बढ़ गया था, सच में गेम का साइज बहुत बढ़ गया था।
चस्का तो है मेरे मेरे लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में भाई एक सेकंड। अबे व्हाट द फक। बहुत ही बढ़िया। जाना कहाँ था? न्यू रीजन। हाँ आज न्यू रीजन आया ना। भाई मैं मोटरसाइकिल से ही नहीं उतर पा रहा। भाई हैंडलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। स्पेस भाई नहीं हो पा रहा। मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे आज तो थर्सडे। अच्छा आज क्रिसमस की छुट्टी मिली है क्या तुम्हें? क्यों वरुण भाई? सही है भाई। भाई मैं उतार ही नहीं पा रहा मोटरसाइकिल से भाई। अबे भाई वरुण भाई तो वो वाला नया गेम खेल भाई, वेयर विंड्स मीट। मैं सोच रहा हूँ राइवल या 15-16 जनवरी के बाद से भाई मैं राइवल उड़ा दूंगा भाई। राइवल नहीं खेल रहा फिर मैं। अबे बहुत साइज बढ़ गया भाई उस गेम का। वैसे बड़ा तो इनके भी गए हैं बट उसका बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। 100-120 जीबी की गेम हो गई वो। ये भी 112 की है। जंक्शन भी 100 की हो गई। स्पेस ही नहीं है उसमें भाई। उन्होंने डेडपूल तक की फाइल्स डाल दी तो भाई वो गेम भाई भाई जब अपन ने डाउनलोड करा था ना, अपन ने जब डाउनलोड करा था मतलब क्या बोलते हैं, जब इनिशियल रिलीज पे जनवरी के टाइम पे, तब भाई वो गेम का साइज था, तब वो गेम का साइज 58-60 जीबी था भाई। 58-60 जी अब भी डबल हो गया है। और भाई अभी इतने वो भी नहीं आए हैं हीरोज वगैरह भाई। हर महीने एक हीरो, मतलब 12 हीरोज ऐड हुए हैं बस। हर महीने एक हीरो आता ही है उनमें। तो तब सब तक 12 हीरो ऐड हुए हैं। और क्रेजी भाई, क्रेजी गेम साइज बढ़ गया है। स्किन्स वगैरह रहती है ना भाई, एकदम क्रेजी। देखता हूँ भाई जी फोर्स इंडिया आ जाए तो इंडिया में तो मैं प्रोबेबली ऐसे वाले गेम शायद उसी पे स्विच कर लूँ। अभी तेरे को पता है मैंने वैलेट तो उड़ा ही दिया था और भाई मेरे पे इतनी स्पेस भी नहीं थी कि मैं इसको अनजिप कर पाऊँ। तो मैंने अभी राइवल्स भी उड़ा दिया तो मेरे पे दोनों ही गेम नहीं है। जी फोर्स के जी फोर्स नाउ। अरे मतलब जैसे लो एंड लैपटॉप रहते हैं ना, मतलब स्पेस का इशू या कुछ है तो वो तुम ब्राउजर से ही गेम खेल सकते हो। ऐसे तगड़े तगड़े गेम वदरिंग खेल सकता है, जंक्शन खेल सकता है फ्री में। उसका क्या तो उस पर चल जाएगा ना। वो सर्विस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में आ जाएगी सर्विस, नवंबर में आनी थी, वो प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, प्रोबेबली जनवरी में आ जाए बोलते यही रहे। मैं देख रहा था रेडिट वगैरह पे।
अरे इतना स्टेबल नहीं होता भाई क्लाउड गेमिंग, नहीं रहता है भाई। वरुण तुम मानेगा नहीं भाई, सही में वो स्टेबल रहता है। स्पेशली जो एक्सबॉक्स का ट्राई किया नहीं, एक्सबॉक्स का है भाई वरुण, वो सही में स्टेबल है। जीए फोर्स वाला सही में स्टेबल है, झूठ नहीं बोल रहा, सही में बहुत स्टेबल है। मतलब भाई तेरे को लगेगा नहीं कि ब्राउजर में चल रहा है गेम, ब्राउजर बोल ले या एक बहुत ही सस्ते एप्लीकेशन में चल रहा है। मतलब वो कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है इतना, जैसे राइवल्स हो गया या वैलो हो गया, चलते वो भी हैं बट वो उसके लिए तो ऑप्टिमाइज नहीं है। बहुत क्रेजी है भाई वो। How do you feel? Settling in all right? बाकी गेम्स तो सही चलेगी, एफपीएस को छोड़ के। नहीं फ्रेम्स भी आते हैं, फ्रेम्स भी आते हैं हाँ, एफपीएस को छोड़ के भाई, फर्स्ट पर्सन शूटिंग को छोड़ के या शूटर गेम्स को छोड़ के भाई वो अच्छी चलेगी। यार उसमें ना वो नहीं है यार, वेयर विंड्स मीट, वरना मैं उस पे खेलता भाई। You like racing that much? फ्रेम्स, अबे फ्रेम्स नहीं, वो समझ गया मैं भाई, फर्स्ट पर्सन शूटिंग भाई, मैं फ्रेम्स पता नहीं क्यों बोल रहा था। फर्स्ट पर्सन शूटिंग भाई, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। But I found more freedom under it than I've ever known anywhere else. मैं फ्रेम्स भाई, सही में दिमाग में पहली चीज फ्रेम ही आती है भाई, एफपीएस देख के। I mean, you've only got one life, right? Might as well live it the way you want. When to brake, hit the gas, hell, even the paint job of your ride. Doesn't matter if you're a normie or a resonator. Everyone should have that choice. That's what Star Torch Academy is to me. Before I came here, I never imagined a place like this could exist. Full of people so pure, so driven. बाकी स्ट्रीम डेली क्यों नहीं कर रहा With the resolve to यार, build in the search मन for नहीं होता answers. टू बी With the ऑनेस्ट, belief they can मन नहीं actually होता, end the Void Storm and the Threnodian. And maybe मन नहीं break होता। through the etheric sea to find what true freedom really looks like. It's beautiful. बाकी चीजें भी ट्राई करनी है ना यार, धीरे धीरे करके। इस चक्कर में Watching them chase their dreams, it's hard not to want that for yourself. क्या कर रहा है स्ट्रीम के अलावा? कुछ नहीं, Student here. You have what it takes to chase your dreams too. बताता हूँ बाद में। एक कोर्स भी था Yeah, उसमें, you're right. स्किल्स पार करके था एक, बताऊंगा। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तेरे को। Oh, almost forgot. भाई वो था अक्षत से भाई, कल मैंने रात में बात करी भाई, वो बनारस चला गया भाई। Star Torch Academy student. मेरे को लगा था यहाँ रहेगा, My first introduction was पता too नहीं, rushed, शायद so फैमिली के I'm साथ doing गए it properly शायद। this time. I'm Lene, a second year in the preparatory program. हाँ पता है। मेरे कॉल करने पता चला, फैमिली के साथ। Time flies. Feels like I just got here, and now I'm a second year. You could call me Miss Lene if you want. Well then, pleased to meet you. Miss Lene? भाई वरुण वो ट्राई कर भाई, वेयर विंड्स मीट भाई, बहुत क्रेजी गेम है। Maybe just stick with Lene. Not really used to the whole formality thing. मजा आ जाएगा भाई खेल के। All right, let's get moving. Time to hit the road. प्रॉब्ली सोच तो रहा था एसएसडी लेने का, बट भाई अभी प्राइसेस क्या हाइक हुए हैं इन सब चीजों के, Keeping up with me like this? सब लेने का मन नहीं करता You're भाई। pretty good at driving, aren't you? Piece of cake. Oh,
यार इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती है, पता नहीं क्यों। या तो भाई मेरी बाइक अपग्रेड नहीं है, आउच, इस चक्कर में ऐसा रहता है। माँ की आँख। मेरा थंबनेल देखो, बताओ कैसा लग रहा। तुमने उसमें और भी कुछ ट्यूनिंग करी है कैसे भाई? मैं तुम्हारी स्ट्रीम तो दिखाई नहीं रही। तुमने डीएम करा है क्या? तुमने डीएम भी नहीं करा है। मेरे को मैनुअली जाना पड़ेगा क्या? चैनल पे जाकर, या मेरे को मालूम है ऊपर ही दिखा देता है कि अगर स्ट्रीम सेट करा है। देखता हूँ। ओ भाई ये ज्यादा क्रेजी लग रहा है भाई, ये पिछले से ज्यादा क्रेजी लग रहा है भाई। मैं तब से वहीं पे रहता हूँ। भाई सच में भाई यार ये गेम भाई सही में वर्थ इट है भाई खेलना। भाई भाई बाय फार ये मेरे को भाई रीना सीता से ज्यादा अच्छा रीजन लगा। रीना सीता और हुआंग लॉन्ग से कंपेयर करूँ तो जितना जितना अच्छा इसका इंट्रो बना हुआ है भाई, लाइक लेजिट भाई। पोस्ट लिमिट में मैं ऐसे ही कुछ इमेजिन करना चाह रहा था कि हाँ ऐसा दिखे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है कि हाँ भाई पोस्ट लिमिट के बाद तुम मतलब भाई ऐसे अलग अलग भाई टैसेट फील्ड आएंगी, उससे तुम फाइट करोगे ऑफ कोर्स। बट भाई ऐसी एक जगह होना। देखा क्या? हाँ देखा ना मैंने, अच्छा है ये। ज़्यादा ज़्यादा वो सही लग रहा है वैसे, सेल्फी टाइप में भाई। मैंने बोला था ना तुम्हें, सही में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Just on the way here, I thought I saw more void storm zones than usual. Makes you wonder. But that's not for me to worry about. Priority is getting your cassette burned. Look over there. See that floating structure along the track? That's the Space Trek Collective. From here, you can take the Star Torch Express straight inside. Yep, they connect Lahai Roy to the surface Frostlands. But with all these void storms, surface trips, except for the supply runs, are on hold. Every train turns back here once it reaches the Institute. Well, my mission's done. Once you're inside, someone will take you to the cassette burning room. If you have questions, find Professor Mornier. She looks aloof, but trust me, she's cool. And she's one of... I'd love to stick around, but I can't skip another afternoon class. Don't sweat it. It's the right thing to do. When I first arrived, the seniors showed me the ropes, just like this. Go on. When you're done, I'll give you a tour of the campus. Well, time to take care of my own business.
Hmm? How? सब देख लिया भाई। क्या देख लिया आपने? क्या देख लिया सिल्वर भाई? क्या देख लिया आपने? चलो भाई, न्यू रीजन एक्चुअली बहुत क्रेजी है भाई। कर लो भाई पुराने क्वेस्ट। Helios parameters. देखो नई Stable. ग्लॉसरी भी ऐड करी है। Huh? Void storm reading spiking again. Oh, no. वैलो इंस्टॉल करता तो That's खेलते yesterday's दिन में। report. Ugh, my head. My brain's turning to data soup. बाइक मिली? हाँ मिल गई बाइक। भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। Of course. This should lower the margin जन of error चैट to में the सर्वर minimum. का Oh, sorry. Cassette. क्या है जन चैट में? Cassette depository is just through the portal over there. Oh no. What was that verification method I just thought of? ओ ओ भाई ये मैंने देखा था। ये मेरे को स्केच पे दिखा के गए थे। मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा बवाल है हुआ। मेरे को स्केच पे दिखा के गए थे ये। भाई को कर सकती है कंट्रोल को। हर्षद भाई को कर सकती है। गुड मॉर्निंग नाइटमेयर। गुड मॉर्निंग भाई। भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हो नहीं रहा। अभी बाइक स्विच नहीं हो रही भाई। One with the sounds. बाइक स्विच नहीं हो रही।
या मैं सोच रहा हूँ क्वेस्ट छोड़ दूँ, बाद में करूँ क्वेस्ट, थोड़ा रीजन खोल लूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा है? वैलो करना डाउनलोड। भाई यार इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं आती भाई। मैं शाम तक कर पाऊंगा भाई। स्पेस बिल्कुल नहीं है मेरे पास, स्पेस का बहुत इशू है। वो पता है मेरे को 30 Mbps में हो जाएगा भाई। देख मैं जेन्युइनली तेरे को भाई एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, व्हाट्सएप देखना भाई। तो व्हाट्सएप देखना ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, जस्ट अभी अभी एसएस लिया मैंने। थंबनेल का क्या सीन है पता नहीं भाई, क्या सीन है भाई। अरे वो सिल्वर भाई के चार्ट देखो भाई उधर जनरल में। नैनो बनाना प्रो। भाई तुम यहाँ से कूद नहीं सकते भाई, ये पूरा एरिया ब्लॉक्ड है। तुम्हें एक एक जगह मैनुअली जाना पड़ेगा भाई, ऐसे क्वेश्चन कर करके। ठीक है रहने दे भाई तू। भाई मैं कह तो रहा हूँ भाई, ये यार 300+ के गेम्स हैं। हाँ वही तो भाई, वही तो कैंसर चीज है भाई। जबकि इनिशियली भाई जंक्शन 20-40 GB का होता था, वुवा भी ऐसे ही 40-50 GB का रहता था, राइवल्स भी भाई ऐसा 60 GB का रहता था भाई। भी इन सब गेम के साइज भाई इतने खतरनाक बड़े हैं भाई, पागल ही हो गया हूँ। एक SSD ले ले, देखता हूँ। चिकोना का स्किल अपग्रेड I will be प्रायोरिटी। there for everyone. The divinity may foresee the future of the world, but I doubt they can predict which song people will play tomorrow. इसका क्या ही बोलूँ मैं। लिबरेशन कर लो क्योंकि लिबरेशन मेन रहता है। मतलब जो ओवर टाइम डैमेज आता है ना वो तुम्हारे लिबरेशन से आता है, तो लिबरेशन कर सकते हो ठीक है। मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए मैंने सब कर रखा है। फोर्टे कर सकते हो, फोर्टे में भी अच्छा डैमेज है, कंसर्ट टू रीजन और ये सब। और नॉर्मल अटैक नहीं करोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल अटैक मत करना, इंट्रो मत करना, स्किल मत करना, फोर्टे और लिबरेशन कर लो। और ये सारे चीज़ ये वाली खोल लेना, मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसके हर एक किट का डैमेज बढ़ा के रखा हुआ है। और अगर मैं इसको क्रिट डैमेज वाला वेपन दूंगा जो कि सिग्नेचर वाला है, सिग्नेचर नहीं मतलब जो स्टैंडर्ड बैनर वाला है, तो मेरे रेशो बहुत ख़राब हो जाएंगे, मेरे को फिर से बिल्ड करनी पड़ जाएगी। तो प्रोबेबली मैं देख रहा हूँ कि अगर इसका मैं सिग्नेचर निकाल पाऊँ कि नहीं। मेरे मिक्लीमाइट्स कम है, मिक्लीमाइट्स तो मैं क्या ही बोलूँ। वीकली मैट्स भाई मेरे पे तो वो है। I will be there for everyone as we head toward our shared future. मेरे पे तो वो है, क्या बोलते I हैं will be there for everyone. वो वीकली मैट्स का वो रहता है, क्या बोलते हैं, बॉक्स रहता है, तो उसमें कोई भी तुम वीकली मैट निकाल सकते हो। वो पड़े हैं मेरे पे, मैंने उसी से चीशा को करा था बिल्ड। बट ठीक है। One with the sounds.
अबे यार कहाँ जाना है भाई? बे यार उसने भाई इन्वेस्टिगेट करके दिया था यार, मैं ही बकचोदी कर देता हूँ यार क्वेस्ट करते करते। हो गया। This is the torch of civilization and the future. Chin up. One day we'll touch the etheric sea and the universe beyond. The cafeteria menu's not bad this week. What do you say we... Leave it to me. When you come back... Data's running slow. Just 5 more minutes. I'll stay. Get the students out first. Why is the still failing? Those are just the server racks for the cassette frequency data. Stop resonating with them. At this rate, you'll trigger an overload. Easy. Yes. This is our first meeting. I'm Mornier, Space Trek Collective researcher and professor at Star Torch Academy. Do I not look the part? You डेटिंग came to सिम burn क्यों your लग रहा? cassette, right? हाँ चलो भाई, I'll take you. एकेडमी है ना, लोगों के पास और कुछ करने को नहीं है तो फ्लर्ट करते हैं, यही रीजन है। ये तो प्रोफेसर है। आप यार प्रोफेसर के साथ ऐसा मत बोलो यार, लेने थी तो चलो ठीक है समझ में आता है, ये तो प्रोफेसर है। I know. What was that just now? Recollections. सिल्वी तुम्हारी क्वेस्ट कहाँ तक Recollections of पहुंची है? past space trek तुमने कहाँ researchers, तक क्वेस्ट staff, करे and उसके students. रीना सीता वाले, मतलब कंप्लीट कर लिए थे? Data stored in the cassettes. प्रोफेसर के भी लाइफ More थी, ये क्या बात precisely, हुई? नहीं memories. भाई, They're crucial their to the life are continuity of dedicated to self-aware research purpose consciousness. only. It's what makes us truly human. Lahairoi is constantly shrouded in the void storm, a byproduct of the void-born Threnodian. It has the power to disintegrate the frequency of any living being. To counter this, the Institute produced cassettes, devices designed to capture and preserve सिल्वी a न्यू person's रीजन में सही में बहुत frequency मजा and आएगा, memories, आप खुद खेलना। safeguarding रीना their सीता very हाँ तो existence. कहाँ तक पहुंची स्टोरी रीना The सीता की? cassettes of the लास्ट deceased क्वेस्ट बची are है। kept here. लास्ट क्वेस्ट मतलब क्या, वो गालबरेना वाली? You likely resonated with one of the stored frequencies. या फिर वो क्या बोलते हैं चीशान वाली? Anyway, for now, चिंगयान या जो भी let's नाम है get you to उसका। the burning room. क्योंकि चियान वाली बची है तो उसके बाद फिर एक और क्वेस्ट है, या फिर एकदम ही लास्ट वाली? ये वो भी लास्ट में कंसीडर होता है, इसलिए पूछ रहा था।
Burning protocol initiated. Resonance link confirmed. Burning in 5, 4, 3. Breathing seems normal. Heart rate should be fast, I think. You're awake. मैं पूरी जगह दिख रही है अपनी। हाँ रिकैप ही हो रहा है। ओके ओके नहीं भाई, बहुत बढ़िया है भाई ये। ओके नहीं भाई, वेरी नाइस। भाई रैंडमली कोई भी जगह म्यूजिक डाल देते हैं, ये कोई भी जगह म्यूजिक डाल देते हैं। Those were my memories. But the last one. कहीं भी म्यूजिक डाल दे रहे हैं भाई। Something wrong? Feeling unwell? No, I'm fine. So, this is a Rebel cassette. Well, first, dear friends must complete the... Yes. Your frequency has... But before it can be put into service, it needs calibration. Would you hand it over for a moment? अरे ये अबे ये स्केच भाई की स्ट्रीम चल रही थी बैकग्राउंड में भाई। मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे क्यों गाना बज रहा है भाई। अबे छी भाई, अबे वो स्केच भाई की स्ट्रीम से गाना आ रहा था भाई। अबे भाई Normally resonators from similar origins have close matches. But a perfect match? भाई मैं सोच रहा हूँ ये भाई ये ऐसी फालतू के गाने क्यों डाला हुआ है। And stranger still, तो सीरियस it's not कन्वर्सेशन any चल रहा है, official पीछे गाना बज archive. रहा है। The file is empty. Just some unreadable data. Not corruption. More like someone deleted it. Just a data error. Overwriting should दिल solve नहीं it. दिया, दिल नहीं दे के क्या ही होगा भाई। Professor. दिल तो दिल दे दोगे तो जिंदा कैसे रहोगे भाई। This frequency cassette recorder, or देख ऐसे ही है FCR, will alert you when a void storm appears. भाई, तुम्हें पता है इसे It भाई। also dampens the ये effects of the मैनेजिंग मोड है storm, भाई। and stabilizes your मैंने existence here on मैनेजिंग the मोड high दे दिया road. भाई।
So, keep it on you at all times. वैसे आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून। But without adequate precautions, it still won't fully protect you from the Void Storm's effects. Many surveyors and students have had their frequencies erased this way. आपको मिले चिकन वेपन? नहीं। Professor और Monet, ऊपर से मैं 50-50 हार गया। about my frequency. भाई मैं लिनी पे I have 50-50 read हार your गया report. भाई। मैंने ट्राई करा You're वो निकालने stable का। for now. Compared to your enrollment checkup, your rebel's curve has leveled out. As for the Void Worm, there's no precedent. रुको एक चीज No बताता one's हूँ। ever survived having their frequency devoured. Whether yours can be restored, so don't take unnecessary risks. That's rule number 1. I understand. I'll keep watch अरे for anything that आपको might पता है जो उसका सेकंड बेस्ट इन स्लॉट वेपन है वो एक्चुअली वो वाला वेपन है, स्टैंडर्ड वेपन जो इसका है। ये वाला जो स्टैंडर्ड वेपन है ना, ये वाला, ये सेकंड बेस्ट इन स्लॉट है। अटैक इंक्रीज रेजोनेटर टीम्स कास्ट स्ट्रेन ब्रू, इट ग्रांट्स 20% एट्रीब्यूट डैमेज बोनस। एट्रीब्यूट मतलब सारे टाइप का डैमेज बोनस मिलेगा, लेकिन इसमें क्रिट डैमेज है ना, इसलिए मैं इसको पुल नहीं कर रहा। वरना ये क्रिट रेट वाला है ना, तो भाई मेरे को पूरा एकोज ही चेंज करने पड़ जाएंगे, पूरा बिल्ड ही चेंज करना पड़ जाएगा। पूरा बिल्ड ही चेंज करना पड़ जाएगा मेरे को, इस चक्कर में मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टर पर देखता हूँ, मतलब जो वैसे किसके लिए निकालना है ये वेपन, अगर निकाले भी चाहे तो वही है यार। मतलब जिसके वेपन से नहीं निकालूंगा उसका मैं स्टैंडर्ड बैनर से एक एक वेपन निकाल लूंगा, इसलिए मैं ये वाले बॉल सेव ही मार रहा हूँ। क्या करूँगा ये पुल करके? छह पुल्स हो गए हैं। हाँ 10 करके करेंगे। Professor Mortier, where are you? If possible, please return at once. Dr. Anson, please calm down. What's happening? It's about the artificial sun's launch process. The professors are arguing again. That's the second time this month. भाई आज फॉर सम रीजन मम्मी ने भी छुट्टी ले ली भाई, मम्मी भी घर पे ही है, तो मैं भी भाई तो ओवर एक्साइट होके नहीं खेल सकता भाई। There will help. I'll be there shortly. And you घर में किसी को नहीं पता मैं स्ट्रीम करता हूँ। राइवल्स विन। Sorry. एआई दी झूठ नहीं बोल रहा, अभी फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ राइवल्स। Oh, अभी फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ राइवल्स। if you're free, अभी कितना हुआ है? you can accompany. 32.7 GB। The Research Institute is open to Star Torch students. Walking around here might give you some useful insights. इतनी स्पेस ही नहीं थी कि ये वाला गेम वुथरिंग एक्सट्रैक्ट कर लूं मैं। In simple terms, एक्सट्रैक्ट करने तक की स्पेस नहीं थी। you see in the sky. मम्मी को रात को आके कोड दी क्यों चिल्ला रहा, वैलो खेल रहा था। अरे हाँ सिलवाई होता है ये मालूम है मेरे कॉलेज टाइम पे बहुत रहता था भाई। रात में भाई मैं इतनी जोर से चिल्लाता था, मम्मी रात में 2 बजे उठ के आती, बोला बंद कर लैपटॉप। भाई कसम से इतनी जोर से डांटती थी भाई, और भाई मैं डर के मारे भाई लेड ऑफ करके भाई चले जाता था बिस्तर पे। मैं भाई भूल ही गया मैं स्टोरी कर रहा हूँ भाई। भाई लेड ऑफ करके भाई मैं सीधा जाता था सोने भाई, और फिर दोस्तों का कॉल आता था रात में 2 बजे कि भाई कहाँ रह गया। ये बात होगी 2023 की समथिंग।
मम्मी ने बैकस्टैप कर दिया भाई। और अभी अगर मैंने मम्मी से बोल दिया ना भाई, मैप नहीं दिखा सकता अभी, स्टोरी में मैप नहीं दिखा पाऊंगा मैं। Professor Mornier, what a relief to see you. अभी मतलब ये ऐसे बीच सीन्स में नहीं दिखा पाऊंगा मैं, वो ये डायलॉग्स वगैरह सब खत्म हो जाए तो फिर मैप खुल जाएगा। ऐसे बीच से डायलॉग डिलीवरी में नहीं खुलता मैप। स्पेशल स्टोरी मोड इसमें भी आ गया, जैसे Well अपन then. रहता है ना कि एनहांस मोड रहता है कि हाँ फोकस मोड, वो इसमें भी आ गया है। तो फोकस I मोड में ही चल रही है appreciate your स्टोरी। perspective, Professor Anselm, but according to Royan calculations, this launch window is the best we've had in decades. How can you be so certain, Warren? Their optimal window is derived from those indecipherable runes, with no methodology disclosed. Even our most advanced computational systems have failed to decipher their The Roya are our partners, Professor. Their calculations are unquestionable. All we can do is uphold our side of the bargain and make sure the new solar ceremony goes off without a hitch. सोलार सोलरी, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये कि एक कलेक्टिव ग्रुप है इंटरनेशनली Well then, जो साइंटिफिक I believe counsel from a टेम्परामेंट्स पे third काम करता person है। may serve us well at this point. फॉर द कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। I'm inclined to proceed with the but given the unsatisfying results from the last simulation. I understand Professor Anselm's concerns. I'll go to Beata Woods to consult with the Heliotic Six भाई and ये देखो re-verify the parameters. भाई, मालूम है ये जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये भाई मेरे को एक्चुअली बहुत पावरफुल लगते हैं, जिनके हेड के ऊपर ये ऐसा कुछ सर्कल सा आता है ना, क्योंकि भाई ये सिंबलाइज करता है कि मतलब भाई सपोज करो कोई क्राउन है, और क्राउन भी वर्दी इनफ नहीं है कि भाई वो तुम्हारे सिर पे आके बैठ जाए, इसलिए फ्लोट करता है क्राउन। तो ये और ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है जिनके ऊपर क्राउन रहता है, इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट। What matters now is ensuring that the institute can calculate मतलब and calibrate क्राउन the भी वर्दी नहीं है reactor कि उस drive's इंसान data की in वर्दनेस बता दे, time वो for the केवल उस launch of क्राउन the से, new sun. इसलिए क्राउन भी उसके सिर पे रेस्ट नहीं We करता। all know the importance of Hyvatia in this process, and I sincerely है ना hope मस्त बात। you'll place more trust in it, Anselm. This is a shared achievement between the collective and the Roya, the very future of Lahai Roy. I respect your caution and the pride you take एनपीसी in के your साइड में work. क्या है ये? But please, ये don't सही let बताऊं तो past मेरे को भी नहीं पता failures क्या है ये। hold you back now. और मेरे को भाई वो पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन वो मेरे को एनपीसी नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है वो प्लेबल होगा बाद में। Fine words. Just don't forget that I warned you. बस इसका वो नहीं है, टैसेट मार्क नहीं दिख रहा, बट स्टिल मेरे को लग रहा है वो प्लेबल है। बट ठीक है, देखी जाएगी। Sorry if I'm being blunt. I'm sure Professor Mornier has her reasons for bringing someone into the lab, but I recognize every face here except yours. Mind telling me who you are? Ah, so you're here to record your cassette. इयरिंग Though with the void storm in full मेरे को नहीं force, लगता इयरिंग आपकी फ्लोट थोड़ी Comes करेगी, कान पे recommended थोड़ी by लटकी the रहेगी। ये Black देखो Shores. जैसे इसकी मोरैन की the लटकी हुई। Black Shores. I see. So you came here by the same means as Miss Chisa, correct? Her sudden appearance in the academy caused quite a stir that day. Would you mind sharing how you... I don't deal with the academy all that much. All I heard was that someone appeared out of nowhere outside... This may not be the right time for such questions, Professor Warren. Oh, forgive me. Curiosity has always been my second nature. Well, if you have the Black Shores recommendation, you're certainly a student here. Allow me to introduce myself. I'm Warren, supervisor of this lab. Aside from the rooms marked no entry, the rest of the facility is open for student visits. I'm sure Professor Mornier will give you a thorough tour, but please
Don't take too long. A key आपको member weird like नहीं लगेगा her कि needs to falas उस टाइप my की work इयररिंग्स calls. किसी पे हो I'll leave you to जैसे it. फ्लोट कर रही है उससे कनेक्टेड ही नहीं है पता नहीं doesn't make any sense even Sorry in you game had to witness their quarrel. Anyway, just like Professor Warren said, feel free to look around as you like. ये देखो मैप स्टार नॉच एकेडमी अपन यहाँ पे आए थे ये स्टार वर्ड राइज ऐसे 5-6 जगह और हैं हाँ Connection severed. Oof. Obstruction. Flicker into form. Let's converge.
अरे यार ये क्या पहना जाता है? Attention all Academy students. Sorry.
हेलो कुकी भाई। एक दो तीन, तीन बचे हैं। हो गई आपकी स्टोरी? नहीं, मैं स्टोरी कर ही नहीं रहा। मैं स्टोरी कर ही नहीं रहा, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही अभी स्टोरी करने की। मेरे को थोड़ा एक्सप्लोरेशन करना था, तो मैं जाके जगह खोल रहा हूँ बस। मन नहीं हो रहा अभी करने का स्टोरी। जगह खोल लूँ पहले, फिर करूँगा स्टोरी, इसलिए मैं जगह खोलने आ गया। जगह कैसी लगी? एक नंबर। बस मेरे फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होना तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। अभी भी मेरे को 45 के समथिंग कुछ फ्रेम्स हैं। मेरे को नहीं लगता है 60 फ्रेम्स पर खेल रहा हूँ मैं गेम। भाई ये क्या जगह है भाई? क्रेजी एज फक भाई, क्रेजी एज फक भाई। भाई यहाँ पर मैं तैर के कैसे जाऊँ? कंट्रोलर नहीं है भाई। वेपन पुल कर लिया? नहीं, 50-50 हार गया ना मैं। तो मेरे है ही नहीं मेरे पे इतने पुल्स के मैं पुल कर लूँ। तुमने तो निकाल लिया ना वेपन और कैरेक्टर। अच्छी कैरेक्टर है भाई, लेनी निकाल सकते हो। मेरा भी मन हुआ था निकालने का, बट मैं नहीं निकाल पाया। प्रॉब्ली मोरैन ने आ जाएगी। मोरैन जो भी नाम है। पर आप तो लेनी नहीं निकाल रहे थे। पता नहीं यार, मेरे को लगा था वो डीपीएस होगी इसलिए मैं नहीं निकाल रहा था। मेरे को अभी रिसेंटली पता चला वो भाई सब डीपीएस बफर है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। किड देख के निकाल रहा हूँ मैं। कैरेक्टर पसंद है, कैरेक्टर तो वैसे खैर पसंद ही है थोड़ा बहुत। हाँ। डीपीएस किसने कहा आपको? पता नहीं यार, मेरे को स्टार्टिंग से ही लग रहा था डीपीएस है। मेरे को कहा नहीं किसी ने, मेरे को ही लग रहा था डीपीएस है। इस चक्कर में मैं उस पे आ गया था। हाँ, हर कहीं गड्ढे डाल रखे हैं।
ग्राफिक मस्त है ना? हाँ एक्चुअली म्यूजिक चेंज करने का फीचर भी सही है। मेरे ऊपर वाले रास्ते पे कैसे जाएं? अबे Trajectory calibrated. और बाइक के भी अलग अलग लेवल्स हैं। ये मेरे को बहुत सही लगा कि अपन बाइक भी अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, अलग अलग फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे, अच्छी हैंडलिंग हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्टेमिना कम कंज्यूम होगा, दुनिया भर की चीज़ें डाल रखी हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सब। हाँ वही लेवल जो बाइक वाला सिस्टम है वही। एक एरिया बचा ये वाला। भाई ये सब जिंजो में भाई कितना कितना मिड मैक्स लगता है यहाँ पे भाई आके। भाई ऐसा कितना लाइवली सा लगता है भाई। Land of the Dead Trees. Trajectory calibrated.
बैरियर लगा है। ओ भाई crazy as fuck भाई। Practical.
हाँ वेपन पे पुल करने का सोच रहा हूँ मैं। तीन 4 स्टार मिले बहन चो। थर्टी 37 के बेटे या कितने बेटे हुए 37। हो गया भाई मेरा गेम से भाई जा रहा हूँ सोने। बाद में करूँगा। अभी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही मुझे स्टोरी करने की। बाय बाय।